And procedure is initially we call for help and then resuscitate the patient if needed, following ABCD protocol. And after side by side, we call for help and make sure that one assistant is checking vitals and one is arranging blood after blood group cross matching, and send all basic baseline. And afterwards, by manual compression of uterus, uterotonics, and in uterotonics we will give syntocinon IM or IV, and then symptometry infusion with 40 units of syntocinon in 500 ml ringal lactate or normal saline, and afterwards misoprostol 800 to 1000 microgram per rectal, carbaprost 0.25 milligram after every 15 minutes, and maximum dose of 2 gram. And if all these maneuvers fail, then we will go with balloon tamponade, Belange, and uterine artery ligation, internal iliac ligation, and if all these fails, then we will proceed with hysterectomy. Frequency of review: 6 monthly or yearly, with the help of audit. We can review our postpartum protocol with the help of audit and date, signature, and references. All right, very good attempt. So just quickly go through the revision. Well, the topic is postpartum hemorrhage, and it can be either primary or secondary. So I would suggest कि either नहीं mention तो ठीक है, आप general ले लो. Others mention and go for the primary postpartum hemorrhage because it is a major cause of maternal morbidity, not the secondary one. The aim is to reduce the maternal morbidity and mortality, written by Dr. Aisha, approved by head of the department, Gynae and Ops, Exquisite Hospital. The title includes how to reduce या how to prevent. अच्छा, अब postpartum hemorrhage में दो चीजें आ जाती हैं titles में. Please read the scenario carefully. It can be either the how to prevent the postpartum hemorrhage or how to manage the postpartum hemorrhage once done, how to manage the postpartum hemorrhage in the local setting, in the emergency setting, in labor ward, in delivery room, or in any BHU or any other setting. तो सेटिंग अगर मेंशन है तो ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंगली टाइटल में उसको मेंशन कर दीजिए सेटिंग को. ठीक है, इट इज अ गुड एडिशनल पॉइंट इफ यू मैनेज एंड इफ यू ऐड द सेटिंग वर्ड in your title. Then comes the purpose to ensure the quality of care, to uplift the quality of care, to meet the international standards, and make the department fit of parts. The scope is for every doctor. You have added a very good point. For the scope is for emergency doctor as well as the gynae resident, for the medical staff, for staff nurses and other paramedic staff. Postpartum hemorrhage की definition हमने बहुत अच्छे से बताया थी. Responsibility is for the head of the department and hospital administration to ensure it, the procedure, each and every step. In the guidelines, in the RCT guidelines, whole of the flow chart is mentioned on the page 40 of the guidelines. एंड वो सब आपने पूरा का पूरा प्रोसीजर मेंशन कर देना कि आप हमने सर्जिकल लेके जाने हैं डॉक्टर आयशा, मतलब पहले मेडिकल फेल होगी, फिर सर्जिकल, फिर वो वाले भी पॉइंट्स बताने हैं. एग्जैक्टली, ईच एंड एवरी स्टेप अनलेस मेंशन अदरवाइज. अगर सपोज लिखा हुआ राइट अ प्रोटोकॉल ऑन द मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पीपीएस, दैट्स व्हाई आई हैव सेड यू अर्लियर कि प्लीज रीड योर सिनेरियो वेरी केयरफुली. इट इज नॉट इट विल नॉट बी द वन वर्ड सिनेरियो और वन स्टेटमेंट सिनेरियो. सिनेरियो कैन कम इन एनी सेटिंग. तो आपने किसी भी तरह से इसको यूज करना. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू में आप एनुअल रखो, मेथड्स में ऑडिट, एंड पे रेफरेंसेस एंड डेट एंड सिग्नेचर. ओके, सो इट्स योर टर्न डॉक्टर जुलिया. प्लीज फॉलो द क्वेश्चन. Dr. Jiveri, you there? Yes. My aim will be to reduce the post-op complications after a C-section, to reduce maternal post-op complications after C-section. Okay, the topic is contraception protocol after. Contraception protocols. So follow the steps. First of all, my aim will be to promote
contraception after C-section and Very to good. motivate patients. Excellent. So you can do it otherwise and get to promote the family planning, birth spacing, reduce the ठीक है. economical burden of, Fertility rate. right? So aim can be anything. Okay. Okay. Written by Dr. Javeria, approved by HOD Gynae Department, XYZ Hospital. Title will be Contraception Use या birth spacing after C-section. Purpose to meet the global standards. Then and also to encourage patient to use contraception या birth spacing and family planning, anything can be used. उसके बाद इसमें and also to बस ये scope में for every medical and paramedical staff. Be peculiar about the case space. So in this scope, you can add the gynae residents who are performing the cesarean section, the patients who are undergoing the cesarean section and their attendants, and the staffs at contraception clinic, which is involved in the counseling. So, am I? Midwives भी कह सकते हैं. ठीक है. Yeah, midwife, या very, family planning specialist. very good. That is known as a contraception clinic. All right. Hmm. Use the Contraception word plan. wisely. Okay. Definition तो कुछ भी नहीं होगी इस ये contraception की. Definition is Contraception. birth spacing or the family planning of the patients after going cesarean section. Okay. Responsibility, then comes responsibility. Responsibility will be of HOD, DMS, and to make sure that the protocol is being followed. Good. Then is procedure. Okay, so it is Procedure में first my. a tricky question. Mhm. Why I have made this Mhm. that contraception is a very vast and broad topic. अगर contraception protocol आता है तो वो आप उस तरह से मैनेज नहीं कर सकते. Contraception protocol after cesarean या during cesarean में आप easily property इंसर्ट की जा सकती है ड्यूरिंग सिजेरियन. तो अगर आप थोड़ा सा और मैं प्रिसाइज कर दूं और आफ्टर की बजाय ड्यूरिंग सिजेरियन कर दूं, तो विल इट बी इजी फॉर यू नाउ कि आप इसको? Yes, फिर तो बस copy TP. I know I'm gonna go with PPIUCD only. Very good, excellent. So you will write down all the steps of how to insert the PPIUCD while during cesarean section in a patient and how to follow it. Please elaborate. Okay. Okay, then during procedure, first of all, I will rule out any contraindication for the placement of the BPIUCD. Then, then after and before the procedure, I will take written informed consent from the patient. If the patient will allow, then only I will place PPIUCD during the procedure. PPIUCD will be placed after the baby is out and when the when after during the when the first layer of the uterus is being taken. With the help of the sponge holding forceps, I will introduce the PPIUCD and will take the sponge holding forceps till the fundus. And then I will open, like I will place the PPIUCD and will remove the sponge holding forceps. I will make sure that the thread should be into the through the internal os, and then I will complete the first layer of the uterus, making sure that the thread will not come into my uterine layer. Very good. So just one Viva question related to the PPIUCD. Will you cut the thread of the PPIUCD afterwards? No. Why? हमने उस दिन कोर्स टाइम किया था ना, उसमें उन्होंने बताया था कभी रूल खत्म हो गया, we don't have to check for the thread after the C-section. Very good. Neither you have to check for the thread, neither you have to cut the thread. PPICD में obviously Yes. अब बड़ा होता है तो उसके अंदर जब आप थ्रेड कट कर दोगे तो वो आपकी लॉस्ट हो जाएगी आईयूसीडी. ठीक है, तो नेवर एवर ठीक है. द थ्रेड इन द PPICD स्टेशन. ओके. वैसे मुझे वाई नहीं बताता डॉक्टर से क्यों नहीं करती, क्योंकि लॉस्ट के चांसेस ज्यादा होते हैं इसलिए. लॉस्ट हो जाएगा. देखो अगर आपने थ्रेड को कट कर दिया तो यूट्रस ने जब इन्वॉल्यूट करना छोटा होना है तो आपको बाद में थ्रेड नहीं मिलेगा. सो हाउ विल यू रिमूव एंड लोकलाइज दैट आईयूसीडी? You can't with the help of perspective examination. Then you have to perform the ultrasound X-ray. ठीक है. Okay. Okay. So in procedure, the last step you have inserted. Next, what next you will do?
मैनेजमेंट स्टेप्स हो गए. आफ्टर दैट अब मैं पोस्ट सी सेक्शन बताऊंगी पेशेंट को, मतलब मैं काउंसल करूंगी. Exactly, very good. And what next? I will counsel the patient about the minor signs and symptoms she can have after the IUCD placement, and she can come after 6 weeks for the follow up, so that to make sure that if the IUCD is in place. लेकिन अब PS तो कर नहीं सकते, भी कैसे चेक करेंगे? उस टाइम भी पीएस नहीं करना, लेकिन से कॉन्सल्ट करने के मेक श्योर कि आपको थर्ड फील होता है कि नहीं, और बाद में 6 वीक से फॉलो पे आते कोई इशू तो नहीं है, तब तो आप कर सकते हो. ठीक है, कर सकते हो. अब प्रोसीजर में अभी एक चीज रहती है आपकी मिसिंग है. encourage breastfeeding. इट इज नॉट रिलेटेड टू योर सिजेरियन सेक्शन, लेकिन स्टिल एक और चीज मिसिंग है. डॉक्यूमेंटेशन फॉलो अप कार्ड, डिस्चार्ज कार्ड पे लिखना है, डिस्चार्ज कार्ड पे. वही फॉलो अप कार्ड. फॉलो अप कार्ड, और डॉक्टर आयशा हैज सेड समथिंग. क्या आपको डिस्चार्ज कार्ड में मेंशन करना है कि पेशेंट को आईयूसीडी प्लेस किया? एग्जैक्टली, वेरी गुड. शो डॉक्यूमेंटेशन आपकी प्रोटोकॉल राइटिंग में, इस वाले प्रोटोकॉल में प्रोसीजर में लास्ट प्रोसीजर के लास्ट स्टेप में होगा इंश्योर डॉक्यूमेंटेशन ऑन द डिस्चार्ज स्लिप ऑन योर फाइल. ये चीज नहीं भूलनी, डॉक्यूमेंटेशन नहीं भूलनी. ठीक है. ओके ओके. व्हाट नेक्स्ट? सो नेक्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटोकॉल राइटिंग. इसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू. फ्रीक्वेंसी ऑफ रिव्यू मतलब 6 वीक्स, क्योंकि 6 वीक्स से बाद होएगी फॉलो अप पे. Review of the protocol writing. Every doctor is ensuring following the protocol or not. So it is always 1 year annually. okay. ठीक है, ओके. And then Method to review audit, mm-hmm. then date, and then signatures. Name and signature. Very good, excellent. So here comes to the end of the protocol writing. All right. Any question? डॉक्टर ईशा, जो उसमें हमारी बुक में दिए हुए ना प्रोटोकॉल्स, उसमें सबसे पहले उन्होंने रिससिटेशन से स्टार्ट किया. जैसे पीपीएच का तो उन्होंने कहा है कि सबसे पहले आपने कॉल को हेल्प करनी है, फिर एबीसी करना है, फिर वो आईवी लाइन ब्लड ड्रिंक वगैरह, मतलब ये सब चीजें भी बताई हुई हैं, तो हमने ये भी मेंशन करनी होंगी. एग्जैक्टली, ये सब चीजें मेंशन करेंगे. सर्टिफिकेट पूरा स्टेप, पीपीएच का जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है गाइडलाइंस के एंड में आरसीओजी की, वो पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आपने लिखना भी है और बताना भी है. साथ साथ बताते जाने और साथ साथ लिखते जाने, पहले लिखना है और फिर सुनाना है. डिपेंड करता है लेटेस्ट. अब क्या है कि आपका एक स्टेशन के ऊपर तो देते हैं कि आप प्रोटोकॉल लिखो और फिर नेक्स्ट स्टेशन पे जाके अपना प्रोटोकॉल डिस्कस करो. ठीक है. अच्छा. So comes the end of the protocol writing topic.